Shortly after midnight, on 7th May 2025, India carried out air and missile strikes on at least 6 locations in Pakistan and Pakistan-administered Kashmir. These strikes constituted the greatest escalation in tensions between India and Pakistan in the past 50 years. India claimed that the strikes on these locations were carried out in response to the killing of tourists in Pahalgam, in Indian-occupied Kashmir, on 22nd of April. On the morning of 7th May, India released an official statement saying that they had ceased all military actions and wanted to avoid any further escalation. However, only 24 hours later, on the morning of 8th May, India attacked Pakistan again, this time using Israeli-made drones. As per Pakistani sources, at least 25 of these drones were shot down by Pakistani air defenses. 2 of these drones crashed in Karachi, a densely populated city of some 20 million people over 160 kilometers from the India-Pakistan border. The first drone crashed near Haji Shah Ali Goth at about 10 a.m. on 8th May. The wreckage fell just 400 meters from the government boys' primary school in Sharafi Goth, Malir, and only 80 meters from the village mosque. Soch sent a team to visit the site and speak to those affected by the crash. अभी तो सब डरे हुए खौफ से आए हुए सब बाकायदा आ रहे हैं वालदा के पास बेगम के पास बच्चों से मिलने के लिए क्योंकि बच्चे सब सो रहे थे जब ये सुबह हादसा हुआ है। सुबह 9:45 बजे के करीब हुआ है ये वाक़या। एक कोई चीज़ शिप टाइप की ड्रोन टाइप का कुछ आया और वो आके बस शोर ऐसा ब्लास्ट करा उसने छत से टकरा के कि पूरा एरिया हिल गया। सोते हुए लोग उठ गए और भागे सब चीखते हुए निकलते हुए। पड़ोसियों भी हैं बेचारे ये भी भागे। हम समझे इनके यहाँ कुछ हुआ है, ये समझे हमारे यहाँ कुछ हुआ है। पता नहीं चल पा रहा था, धुआं ही धुआं हुआ था। फिर जब सब बाहर निकले तो पता चला कि हमारी छत से आगे कोई शिप या ड्रोन वगैरह टकराया। तो फिर बस रश लगता गया। वो दूर तक उसके बाकायदा पुर्जे वगैरह गए। वो आई थी आर्मी रेंजर्स वगैरह पुलिस वगैरह आई थी, सब जमा करके लेके गई है। जब ज़रात वगैरह उठाएं, अब देखते हैं क्या होता है। हमारा ये छत व दोनों छतें अभी गिर गई हैं। ये अल्लाह ने बचा लिया, जानी नुकसान से बची है। पहले ऐसा यहाँ कोई ऐसे वाक़या नहीं हुआ कि जो हम लोग बयान करें। सुकून आया तो हमारे 7 साढ़े 7 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता है। यहाँ कोई चेल पेल नहीं है, खेत वगैरह है, यहाँ रोड पे ही खेत है। गवर्नमेंट के आगे यही अर्ज कर सकते हैं, ये बड़ी मेहनत से घर बनाया गया, कुछ हम लोगों के साथ मदद की जाए। इस वजह से कि ये लोग हम लोग जो है फिर ये नुकसान तो पड़ोसियों का भी ज़्यादा हुआ। अंदर नीचे शीशे वगैरह सब टूटे, मगर वो तो डरे हुए इतना है कि किसी को अंदर ही नहीं जाने दे रहे बेचारे। तार वगैरह टंगा हुआ था इस पे, जो वो ड्रोन था जो कि था उसका सर्किट वगैरह यहाँ टंगा हुआ था और रेंजर्स आर्मी लेके गई है। ये इलाका तो बहुत ही यानी कि 1840-47 से है। ख़ास तौर पर यहाँ पर जो बलूचों की आबादी है ये हाजी शाह अली गोथ है। इसके अलावा शराफी में पूरी बलूचों की आबादी है। उसमें जो मकामी सिंधी भी रहते हैं, बलूच भी रहते हैं। 1800 यानी कि पाकिस्तान की आज़ादी से पहले की आबादियाँ हैं। और ये आबादी तो खैर अभी बनी है तकरीबन मेरी याददाश्त के मुताबिक 2013 में। यह इलाका हमेशा से पुरअमनी इलाका रहा है। हमने कभी यहाँ पर ये नहीं सुना है कि कोई मसला हो या कोई यानी कि हम दहशतगर्दी का कोई मसला पेश आया हो या ऐसे लोग आए हों। यहाँ पर तो कभी भी ऐसे ही बात सामने नहीं आई। On its way down, the drone hit a building which was still under construction. The debris and fragments of a drone reportedly shot down by Pakistan were found at the location. The second drone in Karachi was shot down in Gulshan-e-Hadid near Steel Town. Dawn also reported the same. SHO Steel Town, Alan Abbasi Khan, told Soch that before media persons could reach the location, the debris was removed and confiscated by the Air Force. We also got in touch with a munitions expert for forensic analysis. Trevor Ball, an associate researcher at Armament Research Services, identified the drone debris shown in the image from the site of the crash. His assessment concluded that these are Israeli-manufactured Harab drones. These drones have been called self-sacrificing because they come with a 50-pound high explosive charge and explode on impact. Past evidence also suggests that India has engaged with Israel to acquire these deathly drones in the recent past.
According to TRT Global, over the last decade, India has imported military hardware worth $2.9 billion from Israel. India has claimed that these attacks were in response to Pakistan's attacks on military installations in India on the night of 7th May, but no clear evidence of that attack has emerged. In fact, Indian fact-checkers have already debunked various visuals being shared on social media which were used to claim Pakistani strikes against India. While India maintains these drones were targeting military installations, the reality is they struck civilian areas in some of the world's largest cities, clearly intended to sow panic. One other nation in recent history has deployed this tactic: Israel.